Hello guys, welcome back to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. I am Ritu Mishra Sood and today we are going to talk about top colleges through Maharashtra CET or MHCET. Since now CLAT is over, ALET is over, आज हम एक बहुत important exam, entrance exam के बारे में बात कर रहे हैं for 5-year integrated law that is MHCET और उसके कुछ top colleges के बारे में. So the first college which is very important and very demand wala college is GLC Mumbai. This is the name with which all of you must be familiar with. अगर आप महाराष्ट्र CET लिख रहे हैं, that is the college which tops the list of desirable colleges, which is located in Mumbai and affiliated by Mumbai University itself. It has a very old legacy. It is one of the oldest college in Asia. And it is pretty affordable. So besides oldest college and a very strong alumni network, it is very affordable. Probably for entire 5 years, you will have to pay somewhere 1 lakh or below 1 lakh. The only drawback this college has is that it does not have hostel facility. But no worries, hostel facility college की तरफ से नहीं है, लेकिन they do have certain arrangement for economically weaker section students and इसके nearby there are different hostel facilities which are pretty affordable as well as nice. So if you are looking for Maharashtra CET, this is the college that you should look forward for. इसका जो average campus placement का सैलरी जाता है that goes 6 to 10 lakh के बीच में per annum. The second college which is very prominent in the list is ILS Pune. ILS Pune का affiliation जो है that is Savitribai Phule University Pune. Now this is again very prominent college and very affordable as well. ये जाना जाता है अपने प्रैक्टिकल टीचिंग के अप्रोच को लेके. दिस इज द कॉलेज जिसने अपना नाम टॉप यूनिवर्सिटी से नीचे नहीं आने दिया है एंड यहाँ पे दे डू अगेन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेगेसी एंड एल्यूमिनाई नेटवर्क. इसकी जो फीस होती है दैट इज समवेयर 2 लाख के आसपास एंड इट ऑल्सो हैज़ हॉस्टल फैसिलिटी. तो जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसका फीस भी बहुत अफोर्डेबल है एंड इसका जो कैंपस प्लेसमेंट है विच यू कैन सी हॉस्टल फीस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. बॉयज़ के लिए 50,000 के आसपास है, गर्ल्स के लिए 2.5 के आसपास है एंड इसका जो एवरेज कैंपस प्लेसमेंट है दैट गोज 8 to 10 lakh 11 lakh के आसपास. द थर्ड कॉलेज दैट यूजुअली MHCET एस्पिरेंट शुड एस्पायर एंड जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं जो बहुत फैमिलियर हैं इन चीज़ों से, जो एस्पायर करते हैं दैट इज मीठीबाई कॉलेज. When you talk about Mithibai College of Law, it is again affiliated by Mumbai University, one of the old colleges with very affordable fee price. It has hostel facilities and इसका फीस भी 1.5 लाख के आसपास आता है आपका entire 5 year के लिए and campus placement is slightly lower, it goes somewhere 7 lakh के आसपास. Then another college in the list is Dr. B.R. Ambedkar or Dr. Ambedkar College, Mumbai. Now this college is not very well known for 5-year integrated law क्योंकि इसमें 5-year integrated law का जो कोर्स है वो comparatively नया है. But 3-year law ये बहुत लंबे समय से इस कॉलेज में है and इस कॉलेज को though all the colleges do have लोकेशनल एडवांटेज बट ये कॉलेज का एक एडवांटेज ये है कि ये वडाला में लोकेटेड है विच इज साउथ मुंबई और कोर्ट इज लोकेटेड नियर बाय द कॉलेज. सो आपके लिए इजी हो जाता है टू गेट मल्टीपल इंटर्नशिप वाइल स्टडिंग. मोर ओवर अगेन दिस कॉलेज इज वेरी अफोर्डेबल. आप पूरा 5 year का कोर्स विद इन 1 lakh कर लेते हैं बिसाइड्स हॉस्टल और लिविंग कॉस्ट. And again, when you talk about the campus placement, it is not very clear since the course is new. But अगर आप top 3 colleges के बाद कुछ देखना चाहते हैं तो affordable, locational advantage and
गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई का एडवांटेज होने की वजह से यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर college. Then besides that, there is one more college, that is Praveen Gandhi College of Law. Again, it is affiliated to Mumbai University, which is again focusing upon the practical knowledge and affordable fee structure and decent campus placement. For such kind of updates, stay tuned. Thank you.